so-called today today is birth anniversary of Bose ji and Modi ji in India Gate, the holograph statues. So how inauguration is going on? So how you look this? The way today. I think it's a wonderful idea, and I'm very grateful. My whole family is very grateful and obliged to Mr. Modi for organizing this thing. In my wildest dreams, I did not imagine that Netaji's statue would come up on Rajpath in that canopy. वो जो छतरी है वहाँ अंदर canopy, King George V statue was there, and King George V was the Emperor of India. Rajpath in India is the most important position, most important address in India is Rajpath. वहाँ पे President of India, before that Viceroy's residence was there, North Block is there, South Block is there, India Gate is there, and next to this is this Chhatri, the canopy, which has been empty since 1960 or 61, and from which now today there will be a hologram of Netaji Subhash Chandra Bose, and thereafter by August 15th, I understand, the statue will be ready and inaugurated. So it is a great honor that Modi ji has given the memory of Subhash Chandra Bose. I could never imagine this would happen. It's beyond my dreams. Whenever I used to drive past, previously when I used to drive past India Gate, when I was in Delhi, and some friends would be with me, they're saying, there's that canopy, maybe Netaji's statue should be there. And I said, impossible. I think Mr. Modi has reserved it for Mahatma Gandhi. But then I was wrong. And I think we are very, very grateful indebted to Modi ji. So do you think it will take a long day because earlier there is a Congress government also, but now Modi in 2014, but now what you are saying that Modi has done. But do you think that previous government also can done this statue of him in India Gate? Politics. You see, what happened was, if you read history, I'm sad that most youngsters don't know the history here. In politics, there are factions, and there were factions between. Netaji had left the Congress and gone, and he had fought from outside, the Azad in Fauj, etc., etc. Actually, it was not Gandhi's movement, peace movement that brought independence to this country, or that de di hame azadi bada bina khadak bada dhal. That's not right. It is actually the activities of the Azad Hind Fauj, Netaji and the Azad Hind Fauj, that brought this country independence. And this was admitted by Sir Lord Clement Attlee, who was the Prime Minister of England at that time, who gave independence to India. So, this, obviously because of that, a lot of friction was created by the Congress party that came into power at that time, and Mr. Nehru was the Prime Minister and things like that. So maybe there was a bit of rivalry. And so it was decided that keep Netaji on the side. Don't. So, which is sad, because history is history. Netaji belongs to, you heard me saying, Netaji does not belong to Bengal or anybody. Netaji belongs to India. Even in history books, nothing is written about Netaji or the INA. Youngsters don't know. Youngsters didn't know that there was a movement of Azad Hind Fauj and things like that. So it is now, I think, we are very grateful. It's a great thing that the Prime Minister is doing, to revive the memory of Netaji. And having a statue there, I hope he will never be forgotten. So now Mamata is demanding that on this day, 23rd January, should be declared national holiday. So in my personal opinion, I'm against this, and I'm sure Netaji also would not have supported it, because one day's holiday would mean thousands of crores of rupees lost from the economy.
Nowhere else in the world do they have holidays. In America, in England, they don't have holidays on the birthday of Winston Churchill. In America, they don't have a holiday of Abraham Lincoln's birthday. In England, even the Queen's birthday is not, the King's birthday or Queen's birthday is not a holiday. So all this, we have so many holidays. There are more holidays in India than working days. Sadly, Mahatma Gandhi Jayanti, Nehru Jayanti, this Jayanti, that, I mean Shivaji Jayanti. I mean, they're all great people, all great warriors, all great men. You should actually work harder on their holiday to give them honor. Not sit at home and enjoy. So do you think the way the politics is going on the name of Subhash Chandra Bose and other leaders like Shivaji Maharaj and others, do you think the politics are doing, because by the Mamta today we have seen there's this dispute between the BJP and the TMC? I don't. It's I think the dispute between TMC and the BJP is basically. I mean, it is a very ugly situation. Bad words are being exchanged, and it's an ugly situation. And I guess she was very upset that the BJP were trying to take over, control Bengal. So that's the reason she started all this. However, having said that, there's a problem of this, honestly, in Bengal, there's a problem of this Muslim population and Hindu population and all the rest of it. 40% of the population and 40% of the voters, 35-40% of the voters in Bengal are Muslims. So maybe they think that BJP is a Hindu outfit, so let's not vote for them. It's all very sad, religion and things like that. I'm against all that, but then I'm a very small man. So on this, one last question on this about the issue of Bose, do you demand from the government anything from the central government, because still there's a lot of controversy regarding it? So do you want to demand anything on this? Yes, I have one request and not a demand. We cannot demand anything. So my request is, you see, if youngsters in India, you go to a school, a young girl and a young boy in a school, you take the name of Subhash Chandra Bose, they don't know who he is. It's because, unfortunately, Subhash Chandra Bose's name and memory has been removed from our history books. Completely removed. They don't want, the dispensation which came in 1947 did not want Subhash Bose's memory there. Coming to that, why are we celebrating 15th August 1947 as Independence Day? It was not our Independence Day. On 15th August 1947, we did not get independence. We got dominion status. We still owed allegiance to the King of England because the Viceroy was here, Lord Mountbatten. And after Mountbatten left Raja Gopalachari as Governor General. So we were still a colony, like it was a transfer of power. It's a dominion status, like what is Australia today or Canada today. Today, the sovereign is still the Queen of England. Same was here. So, and sadly, the politicians in those days, be it Mahatma Gandhi or Jawaharlal Nehru or whatever it is, they accepted it. Bose said no. Bose wanted Purna Swaraj, none of this dominion status. But eventually, they settled for dominion status. Understand one thing, as Netaji said, freedom is not given, it is taken. So, ये जो हाथ जोड़ के हम बोलेंगे ब्रिटिश को आप यहाँ से प्लीज चले जाइए चाय वाय पी के, ये सब नहीं होता. उनको निकालना पड़ेगा. इसीलिए आजाद हिंद फौज ने उनको निकाल दिया. आजाद हिंद फौज के डर से ब्रिटिश ने यहाँ से चले गए. Not because of Mahatma Gandhi's, because Clement Attlee, the Prime Minister of England at that time during 1947, he made a statement when he was asked to what extent was Gandhi's activities responsible for leaving. He said zero, none at all. He said, why did you leave? So he just said Subhash Chandra Bose and INA. Because the Indian Armed Forces went on, same thing as 1857 was happening. तो डर के बारे चले गए यहाँ से.
कि ऐसे ऐसे होगा तो हम कहाँ से जिएंगे, हमारा निकलना मुश्किल होगा यहाँ से. So that's the story. And people should know that. And also rewrite the history of India. Rewrite. Not only I'm not talking Subhash Bose, everybody. You know, Shivaji Maharaj, whoever it is, I'm sure Shivaji Maharaj's full history is not written. I mean, I studied in school, there was not much on Shivaji Maharaj. Maybe there's much on Shivaji Maharaj in Maharashtra, but if you go to schools in Bengal, there's nothing. So after all, he was a national hero, whatever it is. He was a national figure. So was Subhash Chandra Bose. So the basic thing is go down to the grassroots, education. बच्चों लोगों को सिखाओ कि what India is all about, what we come from. That is what I want. सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री जो है कि इंडिया गेट पे आज होलीग्राफी स्टैचू जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो 125वीं मनाई जा रही है, किस तरह देख रहे हो आप जिस तरह से आज इंडिया गेट पे आज होलीग्राम स्टैचू? ये जो मोदी जी ने किया है मोस्ट वंडरफुल न्यूज़, इट्स फैंटास्टिक. वो जो जगह है इंडिया गेट, इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट जगह वही है. सबसे इम्पोर्टेंट जगह इंडिया में वही है. राष्ट्रपति भवन वहाँ पे है, पीएमओ ऑफिस वहाँ पे है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफिस वहाँ पे है, इंडिया गेट एक इमारत जो है वहीं पे है. तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह हिंदुस्तान में नहीं है. और यह तो गौरव की बात है कि मोदी जी ने उसी जगह वही जगह सिलेक्ट किया है कि नेताजी का स्टैचू लगाओ. वहाँ पे जो छतरी है, छतरी के अंदर किंग जॉर्ज द 5th का स्टैचू था. 1960 था. किंग जॉर्ज द 5th वो इंडिया के शहंशाह थे. अब वो 1960 या 62 में वो हट गया, तब से ये छतरी खाली है. तो उसके अंदर मैं तो सोचता था वही छतरी में महात्मा गांधी का स्टैचू आएगा. एंड व्हाई नॉट, ग्रेट मैन ही वाज. बट ये तो मैं आश्चर्य हो गया एक्चुअली कि अभी मोदी जी ने इस छतरी में सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगा रहे हैं. तो इट्स बहुत खुशी की बात है. आप लोग को उम्मीद थी सर इस तरह की, क्योंकि काफ़ी साल से कई साल क्योंकि इसके पहले भी सरकार थी जो शायद जिस तरह से मोदी जी ने आज स्टैचू वहाँ पे इंडिया गेट पे, क्या इसके पहले भी कर सकते? आपको उम्मीद थी, लेकिन क्या नहीं? उम्मीद जब बीजेपी आई, हाँ, उसके पहले झूठ क्यों बोलो, नहीं, एकदम नहीं था. कोई उम्मीद नहीं थी कुछ होने वाला है. ना मोदी जिस तरह से घोषणा की, जिस तरह से वो काफी एक उत्साहजनक है. आज सुभाष चंद्र जी बोस जी का जन्मदिन है. जी जरूर, यही बात है सर, ये सच बात है. कहीं ना कहीं लग रहा है जैसा सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो नाम को लेकर काफी राजनीति हुई, इसके पहले भी कांग्रेस सरकार हो या और भी सरकार जिस तरह से 70 के दशक की बात करती है, काफी नाम को लेकर चर्चा हुई कि उनकी राजनीति को लेकर सिर्फ उनका यूज किया गया. सुभाष चंद्र जी बोस का नाम, क्या सुभाष चंद्र जी उनका नाम लेके राजनीति काफी की गई. आपको लगता नहीं जैसा टीएमसी बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी और कांग्रेस हो? अभी ममता के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये सब हो, आप तो देख रहे हैं क्या हो रहा है. अभी तो मैं सुना कि भाई जब वो मेरी यहाँ पे इंटरव्यू हो रही थी, वहाँ पे मारामारी हो गया. हमें ये आज नेताजी का जन्मदिन है यार, आदमी को मार रहे, ये गोली मार रहे, ये सब चल रहा है वहाँ पे. अब वो मेरे गांव में कलकत्ते के बाहर जहाँ से हम हैं वहाँ पे हो रहा है ये. I mean, this is ridiculous. It's very, very sad. ये ममता की सब करने की जरूरत क्या है? देखिए, जो मैं कहते आ रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस is not from Bengal. He's not Bengal. He's India. तो ममता कहाँ बोल नहीं सकते कि सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं ना. सर, जिस तरह से ममता बनर्जी मांग कर रही है सरकार से कि आज का दिन जो है 23 जनवरी उसको नेशनल हॉलिडे मांग किया. नहीं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से नेताजी वो ऑल्सो ऐसे नहीं चाहते थे कि मेरे ख्याल से एक दिन बंद करो इंडिया तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है. और किसी भी देश में ये है नहीं कि इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल के जन्मदिन पे कोई छुट्टी नहीं है. अमेरिका में एब्राहम लिंकन के जन्मदिन में कोई छुट्टी नहीं है. इंग्लैंड में अरे रानी के जन्म में भी कोई छुट्टी नहीं है. तो छुट्टी देने की जरूरत क्या है? कुछ हो तो उस दिन ज्यादा काम करो.
छुट्टी देने की जरूरत क्या है? क्या करोगे घर पे बैठ के? थोड़ी ना, तो अगर इस दिन में तुम सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के छुट्टी में तो थोड़ी ना घर पे बैठ के सुभाष बोस के फोटो पे आप ये साधना करोगे? कोई तो करेगा ना। तो फायदा क्या है? ये नेहरू बर्थडे, महात्मा गांधी बर्थडे, किसी के बर्थडे में कुछ नहीं करेगा, कुछ छुट्टी चाहिए ही नहीं। आप इंडिया कैलेंडर देखो तो हॉलीडेज ज्यादा है, वर्किंग डेज कम है यार। तो ये सब मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए। सर, आज जन्मदिन है फौज जी का, 125वां जयंती है। सरकार से क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कई चीज़ें ऐसे जो सुभाष चंद्र जी को आप जिस तरह से कह रहे थे उनके बारे में कई लोगों को पता नहीं है, तो क्या यही तो मेरा मतलब पहले से मैं काफ़ी दिनों से 1-2 साल से मैं कहते आ रहा हूँ कि ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई बच्चे लोगों को मालूम ही नहीं है। तो छोटे बच्चे को बोलो सुभाष चंद्र बोस, वो नाम भी नहीं याद रहेगा उसको, है कौन सुभाष चंद्र बोस। तो ये सैडली उनका नाम इमेज पूरा मिटा दिया है। तो अभी जो रिवाइवल हो रहा है, जो मोदी जी कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवाइवल हो रहा है और मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से जो कि हिस्ट्री बुक्स, हमारी जो हिस्ट्री है उसको रीराइट करो, जो करेक्ट हिस्ट्री है। इंग्लिश में कहावत है कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स, यानी जो जीता है वही हिस्ट्री लिखता है। सही बात है, मगर द मोर विक्टर्स, तो इसको सब आप करेक्ट करो ना, सब ठीक करो। तो बच्चे लोगों को याद है। इट्स नॉट ओनली सुभाष चंद्र बोस, कितने लोग हैं कि हमारी हिस्ट्री में जिसके बारे में हिस्ट्री बुक्स में कुछ है ही नहीं, नाम भी नहीं है यार। कितने लोगों को मालूम है कि श्री अरबिंदो रेवोल्यूशनरी थे? कितने लोगों को मालूम है कि श्री अरबिंदो रेवोल्यूशनरी थे? कितने इंडियन को मालूम है कि आजाद हिंद फौज को एटलीस्ट स्थापन करने वाला था एक आदमी जिसका नाम था रासबिहारी बोस, जापान में? किसको कौन जानता है रासबिहारी बोस का नाम? कोई नहीं जानता। तो ऐसे हिस्ट्री में अब शिवाजी महाराज का ना, ये लोग महाराष्ट्र में जो लोग जानते हैं उनको, बंगाल में कौन जानता है शिवाजी महाराज को? कोई नहीं जानता, कोई पूछता भी नहीं है। तो ये सब ठीक नहीं है। पूरी हिस्ट्री को रीराइट करो, काम करो, तो लोग एटलीस्ट यू आर प्राउड ऑफ, आई एम एन इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। किसी को बोलो तो हाँ मैं बंगाली हूँ, और कोई बोलेगा मैं मद्रासी हूँ, कोई बोलेगा मैं तमिल हूँ, कोई बोलेगा मेरा मलयालम। अरे वो भी तो झगड़ा है। आप तमिलनाडु में जाओ, हिंदी में बात करो, कोई बात नहीं करेगा आपके साथ। ये तो बात है ना। और तमिल अगर यहां पे आके बात करेगा, मुझे समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन इज नेशनल लैंग्वेज है क्या? आप मेरे से हिंदी में बात करें ना, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। तो ये सब करना चाहिए ना। और एक चीज एकदम हिस्ट्री में बुक से ये हटाना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इट इज नॉट। 15 अगस्त 1947 हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं है। बुक उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। ब्रिटिश हट गए मगर रानी को रखा गया। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, अभी तक रानी है वहां पे, और इस टाइम ब्रिटेन में राजा था। माउंटबेटन गया तो राजा गोपाल ही चले आया। फिर भी हम इंग्लैंड का राजा को सल्यूट करते थे। तो इट्स नॉट इंडिपेंडेंस डे, डोमिनेंट स्टेटस डे। सो ये सब हटाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए कि तुम 14 अगस्त को जनगण मन। कितने लोगों को मालूम है कि जनगण मन जो गाना है नेशनल, किसने सिलेक्ट किया? आपको मालूम है? कितने जन को मालूम है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिलेक्ट किया? कितने जन को इंडिया में मालूम है हम जो जय हिंद बोलते हैं ना, हमारे आर्म फोर्सेस में ग्रीटिंग तो है जय हिंद। कितने लोगों को मालूम है कि जय हिंद को इंट्रोड्यूस करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस? कितने लोगों को मालूम है कि फादर ऑफ द नेशन किसने पहले बोला गांधी को? सुभाष चंद्र बोस। किसी को नहीं मालूम है ये सब।
तो हिस्ट्री रीराइट करो यार, ठीक, इतिहास को छुपाया गया। इतिहास छुपाया, अभी इतिहास लिखो बचे लोगों के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।